Yes, online people, can you guys hear me and see me? Okay. चलिए तो let me introduce Chiriz. He's a graduate of Nalsar. I talked it earlier also, and last year he had a 384 rank, and this year he improved a lot and had 58 rank this year. Now, one thing I have requested him specifically that he have qualified prelims every year. Okay? Now that is something I have seen that people do not qualify prelims, right? Very good students also do not qualify prelims. तो पहले ये लॉ ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे, राइट, एंड देन ही विल मूव ऑन टू योर प्रीलिम्स आल्सो. उसके बाद में क्वेश्चंस जो भी हैं वो ये लास्ट में एक बार देखेंगे, ठीक है. सो दैट इज हाउ इट विल वर्क. और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है, एनीथिंग एल्स, ठीक है. तो क्लास के बाद इनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है. ठीक है चलिए तो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है. ओके, मिलते हैं फिर. जी हाय. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई विल स्टार्ट विद सम बेसिक जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं टू ब्रॉडली कवर लॉ ऑप्शनल और जो प्रीलिम्स वगैरह की स्ट्रैटेजी होती है. उसके बाद वी कैन डू अ Q&A, है ना. आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दोस. सो लेट मी जस्ट स्टार्ट. आर देयर एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स जो आप चाहोगे कि मैं कवर करूं? आई थिंक वी कैन सॉर्ट ऑफ स्टार्ट विद दैट आल्सो. नहीं, नथिंग कम्स टू माइंड. चलिए ठीक है, देन आई हाँ. Your growth, I mean, as in when you started and where you are right now, how did you know that you're growing and that improvement points? Improvement in the sense of any specific stage of the examination या फिर In general and even for like where your scores were initially in the mains mark sheet, mains answer sheets and all that stuff. अच्छा. So let me just give you a brief background of where my academic journey and then how I came to civil services. As sir had mentioned, I had graduated from Nalsar University of Law, Hyderabad, 2019 batch. Then I worked at a corporate law firm for roughly 2.5 years. उसके बाद during COVID I decided to try for the civil services examination. तो 2022 में ही मैंने लगभग तैयारी चालू की, I think around New Year's, and 2022 was my first prelims. So prelims तो जैसे तैसे निकल गया, but obviously I was very under prepared for means. मेंस का टू द पॉइंट कि लॉ का जो पहला आंसर मैंने लिखा था प्रैक्टिस करने के लिए वो एक्चुअल पेपर का ही आंसर था. उसके पहले मैंने लॉ का आंसर ही नहीं लिखा था कोई, राइट. इतना कम टाइम था. सो ऑफ कोर्स उसमें तो आई डिडंट गेट वेरी गुड मार्क्स. आई थिंक आई गॉट लाइक 680 685 और समथिंग. पर उसके बाद देन आई सॉर्ट ऑफ रीकैलिब्रेटेड. देन सेकंड अटेम्प्ट में आई गॉट रैंक 384 एंड इन दिस अटेम्प्ट रैंक 58. So why I was giving you this context is in the sense of improvement and how to seek improvement, right? That varies from stage to stage. So for prelims improvement track करना थोड़ा difficult है, particularly because mocks का level of difficulty ही अलग होता है within the same institute also. कोई एक mock होगा जिसमें 70 is a very good score. There will be another mock जहाँ पे 105 is a bad score, right? So then what you can do is try to follow those mocks जहाँ पे आपको एक rank list मिलती है, एक open rank list मिलती है. So there what you can do is you can see your percentile. अब हमको पता है कि यार देखो रफली व्हाट सम 7 लाख पीपल सिट फॉर प्रीलिम्स एवरी ईयर, फॉर्म जितने भी भरते हो, बट आउट ऑफ देम 15,000 क्लियर द प्रीलिम्स, राइट. सो दैट इज रफली अ परसेंटाइल ऑफ 98 परसेंटाइल. सो यू नीड टू ट्राई रैंक लिस्ट में देखें कि भाई कंसिस्टेंटली इन अ टफ टेस्ट इन एन ईजी टेस्ट आई शुड बी इन द 98 परसेंटाइल एटलीस्ट. आई थिंक दैट इज वन पैरामीटर. और इंप्रूवमेंट भी उसमें ट्रैक करना ईजी हो जाता है बिकॉज देन यू कंसिस्टेंटली सीइंग कि भाई इज माई परसेंटाइल एटलीस्ट बीइंग मेंटेन्ड इफ नॉट इम्प्रूव्ड, राइट. सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. Means maybe यार I think tests are the best parameter even though tests by themselves are somewhat unreliable, right. Same copy आप दो जगह चेक करने के लिए दोगे तो आपको दो अलग अलग आउटकम्स मिलेंगे. That is a part of the process. But I think a better exercise then also is to see कि मैंने ये सारे जो वैल्यूएशन पॉइंट बनाए थे वो मेरे कितने आंसर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. तो जैसे कि मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैं बहुत स्पेसिफिक वो पॉइंट रखता था कि एक मुझे इंडियन डेटा पॉइंट चाहिए, एक मुझे जेनेरिक सा पॉइंट चाहिए ग्लोबल रेफरेंस के लिए, एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस कि द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड व्हाट आर दे डूइंग अबाउट दिस डिजास्टर एंड व्हाट इज इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट दिस डिजास्टर. हमारी कम्युनिटीज़ क्या करती हैं. सो इफ आई गिव यू एग्जांपल फॉरेस्ट फायर कि 2013 से फॉरेस्ट फायर इंडिया में डबल या ट्रिपल हो गई हैं, थिंग्स लाइक दैट. किस अफ्रीकन कंट्री की बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस है फॉरेस्ट फायर के लिए. मध्य प्रदेश की जो गोंड कम्युनिटी है उनकी बहुत अच्छी बेस्ट ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं फॉर फॉरेस्ट फायर. तो थिंग्स लाइक दैट. तो बस ये देखना कि यार हाउ मेनी ऑफ दोज पॉइंट्स आई एम एक्चुअली एबल टू रिप्रोड्यूस माई आंसर्स. आई थिंक दैट इज अ गुड पैरामीटर ऑफ इम्प्रूवमेंट. Yeah, so then I'll just start with the general points of discussion जो मेरे पास हैं. Yeah, so okay, the first one is books to refer topic wise. Now law में यार I think standard material ही रहता है.
Mostly what I did, because I was very short on time during my first attempt, the 2022 attempt, मैंने तो यार दुक्की से ही स्टार्ट किया था, I'll be very honest. एक ही जैन दुक्की फॉलो करता था मैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए, इंटरनेशनल लॉ के लिए I'll come to later, उसकी दुक्की इज़ नॉट सो हेल्पफुल. क्रिमिनल लॉ के लिए भी दुक्की, टॉर्ट्स के लिए दुक्की, CLD नहीं सॉरी, देन क्या रह गया, टॉर्ट्स हो गया, क्रिमिनल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट मर्केंटाइल. सारे टॉपिक तो नहीं होते हैं दुक्की से, पर जितने हो जाते हैं वो ठीक से हो जाते हैं. CLD ऑफ कोर्स इज डिफरेंट. नाउ इंटरनेशनल लॉ के लिए आई फॉलोड SK कपूर. SK कपूर उनकी बुक से यार आई थिंक बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं. आई थिंक 70% कवर हो जाता है एंड फेयरली अच्छा कवरेज है. और जो ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं जैसे अनक्लॉस हो गया या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो गया, उनके लिए आई वॉज फॉलोइंग मैल्कम शॉ. मतलब मैल्कम शॉ मेरे पास कॉलेज से पढ़ी हुई थी, बस वो 3-4 चैप्टर्स जो कुछ ज़्यादा ही कंसेप्चुअल होते हैं उनको बस फॉलो किया था मैल्कम शॉ से. सॉरी, शुड आई जस्ट राइट इट ऑन द बोर्ड? I first time writing on this board, so Malcolm Shaw. The name of the book is Public International Law. It's a very famous book for public international law. तो you can, और ऑनलाइन मिल भी जाता है, उसका ई बुक मिल जाता है ऑनलाइन. फॉर UN clause, फॉर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड आई थिंक यही टॉपिक्स हैं. बट वो आपको भी देखना पड़ेगा कि आपको किसी और चैप्टर का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यू कैन फॉलो इट. CLD ऑफ कोर्स इज अ लिटिल रैंडम, उसके लिए कोई बहुत अच्छा सोर्स मिलता नहीं है, बट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी सर्स नोट्स. तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड फिर खुद का थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन आप करते चलो, राइट, टू कंसोलिडेट योर ओन मटीरियल. और हैविंग डन दिस, हैविंग स्टडीड द दुक्कीज प्रॉपर्ली, देन आई जम्प टू माई सेकेंडरी सोर्सेज. तो जैसे आई पिक्ड अप VN शुक्ला, कॉलेज में भी हम लोग VN शुक्ला ही पढ़ते थे. तो जैसे कुछ टॉपिक्स जो दुक्की में ठीक से कवर नहीं हो पाते, जैसे एमिनेंट डोमेन हो गया, दीज आर फ्यू टॉपिक्स जो कि बहुत अच्छे से नहीं दिए हैं दुक्की में, सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए मैं पढ़ता था. सो एसेंशियली आई यूज्ड टू यूज बोथ मैल्कम शॉ एंड VN शुक्ला एज एन एनसाइक्लोपीडिया, कि बस वो एक स्पेसिफिक टॉपिक मुझे उसमें से उठा के पढ़ना है इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर बुक. बाकी देयर वुड बी, आई थिंक, डज एनीवन हैव अ कॉपी ऑफ द सिलेबस? I was given a copy, but I think मैं नीचे छोड़ा. Anyway, my point was कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मर्केंटाइल लॉ में भी छोटे टॉपिक्स होंगे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वगैरह है क्रिमिनल लॉ में, उनके लिए आई थिंक आपको थोड़ा गूगल सर्च करना पड़ेगा खुद से. और SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट, PCRA और ये सब POCA में आई हैड अ वेरी सिंपल दिस थिंग, अ वेरी सिंपल पैटर्न. मैं एक टेबल बनाता था, सेक्शन नंबर, डिटेल एंड केस लॉ. तो जो भी रेलेवेंट सेक्शन नंबर है, बस सेक्शन नंबर ही नोट डाउन कर लिए, डिटेल और का केस लॉ, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं इन सब में से बहुत स्पेसिफिक आते हैं. अ क्वेश्चन डायरेक्टली ऑन लेट्स से सेक्शन 3 और डायरेक्टली ऑन सेक्शन 11, ऐसे क्वेश्चंस, राइट. तो आई थिंक वो एक टेबल बना के रख लेना इज जस्ट द सिंपलेस्ट वे टू डू इट, राइट. मेमोराइजेशन के लिए भी इट्स ईजी. बाद में अगर आपको करंट अफेयर्स के केस लॉस भी ऐड करने हैं तो यू कैन सॉर्ट ऑफ एड इट टू द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल, सो दैट मेक्स लाइफ लिटिल ईजियर इन दैट सेंस. सो दिस इज अबाउट द रेफरेंस बुक्स. अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक के बारे में जानना हो तो यू कैन आस्क मी. ठीक है, आई विल मूव फॉरवर्ड देन. What should be the depth of the answer? Sometimes it feels the answer has become very shallow. I just putting out the judgments and I start doubting myself. Ki, if it is what if it is a shallow answer? Like I should dwell deeper and write better answers. So like what should be the depth of the answer? That's a very good question, but I don't think law option allows for a lot of depth. When you have to answer a question 150 or 250 words, आप ज़्यादा डेप्थ में जा ही नहीं सकते, right? And particularly, yeah, it is a game of dropping case names, dropping article numbers, and dropping quotes if possible, right? So, but then of course you have ways of making it subtle. So let's say if you're writing a point, you can say, instead of saying ki in this landmark case so and so Maneka Gandhi was President of India, so and so was said. What you can do is to say ki bhai this is the position, this is my analysis, and then bracket mein last mein supported by Maneka Gandhi, right? So then it's not very in your face ki I'm just dropping case names. I'm saying that this is my argument. This argument is also supported by the Maneka Gandhi case. So in that sense, right? So that एक continuity आती है और in your thoughts कि I am exploring my ideas और I am supporting every single idea with a case name or with an article number, right? So I think that is one good way to do it. और ये मैंने difference create भी किया था इस time. Last year तक मैं approach follow नहीं करता था, which I try to do this year. Right. So I'm just running through the list of topics जो शायद थोड़ा अलग से करने पड़ते हैं. Eminent domain as we discussed. एडमिन लॉ में तो आई थिंक दुक्की इज इनफ, पूरा हो जाता है दुक्की से, एक्सेप्ट फॉर द लोकपाल टॉपिक. लोकपाल शायद उसमें दिया है बट बहुत अच्छे से नहीं दिया है. IL में भी अच्छा, IL में जो लेटर टॉपिक्स हैं ना, एनवायरमेंटल लॉ वगैरह, WTO, NIEO, इनमें थोड़ा गूगल सर्च करना पड़ता है बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स ऑल्सो.
जैसे अभी for the last 1 or 2 years there has just been generally a lot of talk about will there be a nuclear war in the world in any theater, right? Whether it's India, Pakistan or Russia, Ukraine or in Middle East. तो थोड़ा उन ट्रेंड्स को देखते हुए चलना पड़ता है. तालिबान का जैसे अब वन क्वेश्चन दैट आई बीन एक्सपेक्टिंग फॉर द लास्ट 2 years जो नहीं आया was the idea of recognition जो इंटरनेशनल में हम पढ़ते हैं कि de facto versus de jure recognition. How does this apply to Afghanistan? I think that's a very obvious question जो बोर्ड पेपर में आ सकता है बट नहीं आया. तो इस तरह से थोड़ा दिमाग खुला रखना कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आज की रियलिटी में कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, राइट, और किस तरह से सवाल आ सकते हैं उनके ऊपर. तो उस पर भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, राइट. आई थिंक बाकी लॉ ऑफ क्राइम भी कवर हो जाता है. प्ली बार्गेनिंग के लिए आई थिंक यू विल फाइंड सम रैंडम आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट, उनसे हो जाता है. CLD ऑफ कोर्स इज रैंडम, रिक्वायर्स लॉट ऑफ गूगल सर्चिंग, बट दैट्स जस्ट द वे द पेपर इज स्ट्रक्चर्ड CLD का. I'll move on to the next topic, study plans. So मैं काफ़ी सिंपल ही रखता था. Before this, as I said, I was working in a corporate law firm. तो of course my work hours used to vary quite a bit, but on average it was a 9 to 9 schedule, right? तो preparation में भी मैंने वो 9 to 9 schedule ही रखा अपना. बीच में of course I used to take my lunch breaks, my sort of snacks वगैरह शाम को whatever. So in those 12 hours effectively I was able to squeeze anywhere between 8 to 10 hours. That used to be my focus, even though of course counting hours doesn't really matter. It has to be more about completing the goals that you have set for the day. But on average, I would say that this was my schedule. Subah, I would start with newspaper reading, then one big block of 3-4 hours for subject 1, another block between 2 to 5 for subject 2. शाम को depending on which paper it is. तो prelims के जैसे prelims है तो I would do some sort of MCQ practice, और mains है तो I'll do some answer writing practice, like that. And towards the end of the day, if something is left, then I'm just covering that. So वो काफ़ी straightforward ही था. बाकी नोट्स मेकिंग, हाँ, या आई थिंक नोट्स मेकिंग इन लॉ ऑप्शनल इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंटेंट सबके पास सेम ही होता है, क्योंकि सब बुक सेम पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी सेम हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट, विच इज़ वाई वेयर योर नोट्स कम इन टू प्ले. आप खुद के नोट्स बनाओगे तभी आप थोड़ा आंसर को डिफरेंशिएट कर पाओगे, कुछ नया लेके आ पाओगे. एंड नोट्स में भी यार ऐसा होता है कि यू हैव टू कीप पिकिंग थिंग्स अप फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. तो जैसे वन स्मार्ट थिंग टू डू इज़ कि जो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हर दूसरे साल आते ही हैं, जैसे इफ इट्स अबाउट आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, और अबाउट दिस डिबेट ऑफ वेदर इंटरनेशनल लॉ इज हार्ड लॉ, सॉफ्ट लॉ, इनमें कोट्स रेडी रखना, राइट. तो बहुत सारे कोट मिल जाते हैं, HLA हार्ट के कोट्स हैं, ऑस्टिन के कोट्स हैं, राइट. आई थिंक वो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है. एंड दैट इज ऑल्सो वन वे यू कैन डिफरेंशिएट योर आंसर. आपने कोई अच्छा यूनिक सा कोट उठाया तो दैट रियली हेल्प यू. I think even in some basic topics like Constitutional Convention, there are very nice quotes. Like Lord Keaton का I think एक quote है कि Constitutional Conventions are the clothes that are the flesh that clothe the dry bones of the law. So that is a very beautiful quote about this topic. तो I think ऐसे ही evaluate करना पड़ता है, क्योंकि cases सब वही लिखेंगे, article numbers सब वही लिखेंगे. So then it's about कि how कैसे आप कुछ नया fresh दे पाओ examiner को, right? Which is why I think note making is very important, और बहुत easy भी है वैसे note making if you look at the broad pattern. मेरा जो approach रहता था, I would just make a table of PYQs from that topic. उस टॉपिक के जो भी 2013 के बाद से, क्योंकि सिलेबस लास्ट 13 में रिवाइज हुआ था, 2013 के बाद से जो भी क्वेश्चन आए हैं, एंड आई वुड जस्ट मेरे नोट्स उनके आंसर ही होते थे. सो इन सॉर्ट ऑफ अ फ्लो, इन अ कंटिन्यूटी, आई वुड आंसर दोस क्वेश्चंस, और दोज वर माय नोट्स. सो आई डिडंट सॉर्ट ऑफ किसी किताब को मैंने पैराफ्रेज करते हुए ऐसा कुछ करते हुए नोट्स नहीं बनाए, जो जैसे नॉर्मली GS में लोग करते हैं, लक्ष्मीकांत वगैरह कोई पैराफ्रेज कर लेते हैं पूरी को. नॉट दैट, सिर्फ PYQs उठाओ और उनको ही वो कर लो. And I think that works also, because I think law में 80 to 90% questions are repeated, right? So that really pays off. So I think that's also one way to keep the notes making very simple for law. Right. Detailed subject-wise plan. Okay. Right. So for prelims, I think everyone knows what the standard material is, right? वो सारी basic books ही होती हैं, whether it is Lakshmikant or the NCERTs for geography or Spectrum for modern history, वही होता है. I think what I used to focus on, however, is having multiple revision rounds. So prelims के पहले मैंने कभी ज़्यादा focus नहीं किया on mock test. Mock test की utility मुझे थोड़ी limited लगती है. मुझे लगता है कि mock test दो ही चीज़ में काम आते हैं, temperament and time management. So time management figure out करना and temperament figure out करना कि मैं इतने sequences में पूरे पेपर को attempt करूँगा, या फिर मैं इस subject को ही सबसे पहले hit करूँगा, things like that. वो आप I think 10 से 12 mock test में figure out कर सकते हो. उसके बाद I mean of course there are people who say कि 50 mock दो, 100 mock दो, all of that. I'm sure it worked for them. But मेरा यही होता है कि यार after that point mocks की utility खत्म हो जाती है, because it is not like वही सवाल वैसा का वैसा आ जाएगा.
मैंने इतने तीनों अटेम्प्ट में कुछ 40 के आसपास मॉक दिए होंगे टोटल मिला के प्रीलिम्स के, और मुझे तो नहीं लगता एक भी सवाल ऐसा कराया है कि डायरेक्टली आ गया हो. सो देन इट्स बेटर टू जस्ट फोकस ऑन योर रिविजन, फोकस ऑन योर बेसिक बुक्स. आई थिंक हर टॉपर ये बात कहता ही है कि 100 सवाल में से 40 सवाल तो आते ही आते हैं पेपर में, even in a bad paper. I think I'm talking about the 2023 paper, which was a tremendously difficult paper. उसमें भी I think there were 30 to 35 questions, which were straight from the standard books. So I think it's very important to focus on that. उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो you can attempt more mocks, but this was my strategy. Mocks की utility मेरे लिए मुझे पता था उतनी ही है. So the way I used to do it is कि let's say prelims is on अच्छा ठीक है, अभी इस बार के prelims लेते हैं 25th of May, right? तो मैं उल्टा कैलेंडर बनाता था अपना. 25th ऑफ मे को प्रीलिम्स है तो 23rd 24 में क्लियर रखूंगा जस्ट टू कीप माई हेड क्लियर. उस दिन उन 2 दिन में कुछ नहीं पढ़ता था. उसके पहले एक दिन करके 1 हफ्ते का शेड्यूल सारे सब्जेक्ट्स को एक बार रिवाइज करने के लिए. उसके पहले 3 दिन देके, और फिर उसके पहले जो पहला राउंड ऑफ रिविजन आएगा उसमें 5 6 दिन देके. सो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू मेक अ 2 months रोड मैप प्रीलिम्स रिविजन के लिए. आई थिंक अभी प्रीलिम्स के पेपर में कुछ 25 एक दिन बाकी है ना. इज एनीवन राइटिंग प्रीलिम्स दिस ईयर? अच्छा. Right, so I think you still have time to do 2 rounds of revision for the basic subjects, and that should be the strategy. Mocks पे I won't really pass a judgment because मेरा approach बहुत अलग था from बाकी जो aspirants रहे हैं, toppers रहे हैं. But for me it was revision, right? As Meda Anand, the topper from last year, ranked 13, had said कि इस game के 3 ही rules हैं, revision, right? So that was my strategy also. Mains में हाँ, okay. So mains of course. Which standard books are you follow for prelims? Standard book for prelims. Right. So. Questions are so unconventional that they result in direct from सो ओके, सो जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, उसमें से मोस्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं. इस बार का अगर पेपर उठा के देखो प्रीलिम्स का, एक सवाल आई थिंक लिटरली एवरी सिंगल क्वेश्चन इज स्ट्रेट फ्रॉम द एनसीईआरटीज, राइट? आई एम श्योर यू गाइस हैव डन दैट एनालिसिस. ज्योग्राफी के जो सवाल आए हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आए हैं इन द लास्ट पेपर, लिटरली एवरी सिंगल क्वेश्चन, राइट? मॉडर्न में भी यार आई थिंक स्पेक्ट्रम इज डिसेंट ओनली. हिस्ट्री में दिक्कत ये होती है कि यू सॉर्ट ऑफ गो इनटू दिस वाइल्ड गूस चेज, राइट? एंड देन देयर इज नो एंड टू वेयर यू शुड स्टॉप. तो आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सोचना चाहिए कि यहाँ तक मैं पढ़ूंगा, फिर मैं आई विल स्टॉप माई सेल्फ, इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा, राइट? स्पेक्ट्रम आई थिंक इन दैट सेंस इज अ वेरी गुड बुक. और हिस्ट्री में भी आई थिंक एंशिएंट मेडिवल में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एंशिएंट मेडिवल के लिए लोग काफ़ी पीएचडी लेवल की किताबें भी उठा लेते हैं. तो ठीक है, आई मीन देयर वेरी एक्सपेंसिव बुक्स, बट देन इट्स अबाउट हाउ मच यू कैन रिमेंबर, राइट? तो मैं एंशिएंट मेडिवल के लिए जो तमिलनाडु बोर्ड की जो पुरानी किताब आती है, ब्लैक एंड वाइट वाली जो आती थी पुरानी, उसको फॉलो करता था. और उसको मैंने ऐसे प्रिंट करा लिया था कि स्पाइरल बाउंड करा लिया था उससे मैंने, कि एक साइड पे प्रिंट कराया था, पीछे वाला साइड ब्लैंक रख के उस पर ही मैं खुद के मैप्स बना के पेलियोलिथिक साइट्स का मैप वगैरह, अशोकन इंस्क्रिप्शंस कौन से इंपॉर्टेंट है उसको वहीं पे अशोका वाले पेज पे, इस पेज पे अगर अशोका की डिटेल्स है तो इस पेज पे लिख लिया. ऐसे करके मैं उसमें कंटेंट ऐड करता रहता था. दैट इज़ हाउ आई मैनेज एंशिएंट मेडिवल फ्रॉम जस्ट दैट वन बुक. उस क्लास 11th में ही है. 12th आई थिंक इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वो जो मेंस में काम आती है. आई रियली लाइक दैट बुक फॉर मेंस ऑल्सो. बट हाँ, तो दिस इज़ फॉर हिस्ट्री. एनवायरनमेंट के लिए यार इट्स अ लिटिल रैंडम, बट आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए मोस्ट पीपल आई थिंक डू शंकर IAS. तो आई थिंक दैट इज स्टिल अ वेरी गुड बुक. मेरे पास PMFIS की भी कॉपी थी, बट अगेन एज अ सेड कि VN शुक्ला और इनको मैं इंसाइक्लोपीडिया की तरह पढ़ता था, जो टॉपिक समझ में नहीं आए बस उसको पढ़ता था उस बुक में से. एंड दैट इज हाउ आई यूज PMFIS ऑल्सो. आई यूज टू ओनली रीड दोस टॉपिक समझ में नहीं आए, क्योंकि इट्स अ वेरी थिक बुक, 1000 कुछ पेज की बुक है वो. इट्स जस्ट नॉट वर्थ द एफर्ट. अदर देन दैट कौन से सब्जेक्ट्स रह गए हैं? इकोनॉमी के लिए मेरे टाइम पे श्रीराम IAS यूज्ड टू बी अ वेरी गुड रिसोर्स. उनका एक पर्टिकुलर एडिशन था दैट श्रीराम सर हैड रिटन विद 2 other IRS ऑफिसर्स. दैट वाज अ ट्रेमेंडस एडिशन, बट वो अभी थोड़ा आउटडेटेड हो गया है. सो नाउ आई रिकमेंड पीपल टू फॉलो विवेक सिंह बुक. विवेक सिंह इट्स कंसेप्चुअली इट्स अ वेरी गुड बुक. और इकोनॉमी में ये ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट यू फॉलो द न्यूज़पेपर वेरी वेल, क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स, राइट? सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमी. साइंस एंड टेक अगेन अनदर वेरी बैंकेबल सब्जेक्ट. अगर आप ठीक से कर लो तो बहुत ही अच्छा उस पर यील्ड मिलता है. मुझे याद है मेरे 22 के प्रीलिम्स में देयर वर 12 क्वेश्चन साइंस एंड टेक एंड आई वाज एबल टू गेट 11 राइट फ्रॉम जस्ट वन मटेरियल. तो कोई भी अच्छा मटेरियल उठा लो. आई थिंक यूट्यूब पे कुछ लेक्चर सीरीज अवेलेबल हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के, तो दे आर वेरी गुड. मैंने तो फॉलो नहीं किया था, बट बाद में मुझे लोगों ने बताया कि ये भी अच्छा मटेरियल है. सो दैट इज़ वर्थ फॉलोइंग. देन अगेन दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स यहाँ पे PT 365 पढ़ना बहुत काम आता है. तो PT जनरली सवाल कम तक आते हैं, बट साइंस एंड टेक में इट्स वेरी वेरी यूजफुल. कुछ बचा क्या डिड वी लीव आउट इन सब्जेक्ट? आई थिंक IR वगैरह के लिए तो वही यार यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल, ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता नहीं था.
आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल प्रीलिम सब्जेक्ट्स ना, कि कुछ रह गया है? How that you went to the PYT? प्रीलिम्स के लिए या सो आई यूज टू डू प्रीलिम्स रिविजन PYQ रिविजन 2013 से 2013 टू 2023, और उसको मैं बहुत डिटेल में करता था. सो नॉट जस्ट टू सी कि भाई इसका आंसर क्या है, बट ऑल्सो कि विच टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और कि इवन स्टडिंग द रॉन्ग आंसर्स प्रॉपर्ली. ये मैंने खुद से देखा है, नॉट ओनली इन माई 22 अटेम्प्ट बट ऑल्सो 24 अटेम्प्ट. दैट एनवायरमेंट में पर्टिकुलर ऐसा हुआ कि एक सवाल 5-6 साल पहले रॉन्ग ऑप्शन था और उसी पे सवाल आ गया. एग्जैक्टली ऑन दैट वेरी आइडिया जो उस टाइम पे रॉन्ग ऑप्शन हुआ करता था. सो उस तरह का एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत ग्रैन्युलर एनालिसिस ज़रूरी है कि इवन रॉन्ग ऑप्शंस जो हैं, जो कमिटीज़ वगैरह कुछ मेंशन्ड हैं, उनको आप देख के चलो कि ये क्या है, राइट. यू कैंट स्किप देम. और फिर तो काफ़ी दुख भी होता है ना कि यार ये देखा हुआ सा सवाल था और फिर ये नहीं बना, so that really hurts also. So I think it's very important to take care of that. Mains में I think one of the mistakes I did early on was to not focus on PYQs a lot, but this year I tried to fix that. So I didn't do a lot of random answer writing practice essay. I used to write mock tests, but जैसे मैं कह रहा था शाम को 6 से 8 के बीच में जो खुद से प्रैक्टिस करता था, इस बार I focus entirely on PYQs. Right, because PYQs का hit rate means में तो is incredible, right? Even in GS I think it's at least a 30-40% hit rate. So that's very good. That's very helpful. Yeah. Now, acha. Okay. So the next idea is coping up with stress during prelims, during prep. Right. Yeah. ये तो I think is a very good question. I think one of the worst phases that I went through was during my first prelims. So first prelims के पहले I think I had the most anxiety कि of course everyone knows कि इतना ज़्यादा competition है, so few seats, such a vast syllabus. But I think whatever you do, right, you need to keep yourself level-headed. I think there are multiple techniques for that. For some people, they can just sort of talk with their friends, talk with their parents. That is one way to do it. I used to do yoga, I used to meditate a little bit, so that helped me. But there were also times when I had sought professional help for my mental health. So I'll be very open about it. I think if anyone feels like the need for taking assistance from professional for mental, they should not shy away from it, right? तो ये है. But then the silver lining there is कि एक बार prelims निकल जाता है तो अपने आप एक momentum build हो जाता है, which really carries you forward, right? And I think that is very, very helpful. Even though, as I said, in my very first attempt, I was not able to clear the mains. But मैंने अपनी mains की marksheet देखी यार, देखा कि यार, obviously since I only had 3 months, I was able to get a 680, 685 or something. I thought कि यार ठीक है, this is not too bad. I can work upon this. तो वही था यार, एक थोड़ा एक वो self confidence लेके चलना कि इतने में इतना है तो आगे और अच्छा हो जाएगा. I think that is ultimately the best strategy to cope with stress. And I think stress इस चीज़ का भी होता है, कई बार FOMO भी हो जाता है लोगों को कि ये चीज़ फॉलो करूँ या वो चीज़ फॉलो करूँ, इस टॉपर ने तो ये बुक बताई थी, मेरा दोस्त तो ये कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेके बैठा है. यार इट विल ऑलवेज बी अ हिट एंड मिस. आप बेस्ट इंस्टीट्यूट का मटेरियल ले लो ना, इट विल स्टिल बी अ हिट एंड मिस, राइट. पेपर में पता चले कुछ आए ही नहीं फ्रॉम दैट मटेरियल, तो देन इट्स अबाउट टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ. यू विल हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई, या तो मेरे मटेरियल में से आएगा या तो कुछ भी उसमें किसी में से नहीं आएगा. ऐसा माइंडसेट लेके चलोगे तो एंड दैट विल रियली हेल्प यू. क्योंकि फोमो इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, पर्टिकुलरली मेंस में. क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि कंसोलिडेटेड सोर्स नहीं होता. जैसे प्रीलिम्स के लिए वी हैव वेरी गुड बेस मटेरियल, चाहे लक्ष्मीकांत हो चाहे NCERTs हो. मेंस में दिक्कत आती ही है. सो आई थिंक वो एक अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी. मैं क्या करता था, मैं टॉपर्स वीडियोस देखता था और एक टेबल बनाता था. सो एज आई सेड, आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ टेबल्स इन लाइफ. आई मेक अ लॉट ऑफ टेबल्स. सो मैं टेबल बनाता था कि इन टॉपर्स ने ये बुक्स रिकमेंड करी हैं. आउट ऑफ 5 जिस भी किताब का नंबर 3 रीच हो गया, आई वुड जस्ट फॉलो दैट. ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, राइट. देन प्रीलिम्स टिप्स. ओके. So I think I've already discussed my approach towards mock tests with you. Mock test में ज़्यादा मैं effort नहीं डालता था, but जो टेस्ट देता था उनका रिवीजन बहुत डिटेल में करता था. So I think attempting a mock test used to take me around 1.5 hours, but I used to spend 5 to 6 hours reviewing the answers उसके बाद, क्योंकि मैं आंसर्स को बहुत डिटेल में पढ़ता था. कोई नया टॉपिक है तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड खुद से गूगल करता था. तो इस तरह से मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था. जैसे ऑफकोर्स मराठा एम्पायर पे कभी नहीं आए हैं पिछले 12-1 साल में सवाल, बट मॉक टेस्ट में क्योंकि कभी जैसे सवाल टकरा जाता है मराठा एम्पायर का, सो देन आई वुड डू सम बेसिक रिसर्च ऑन द मराठा किंगडम. सो इस तरह से मतलब थोड़ा टाइम देके आई थिंक रिविजन अगेन, एज आई सेड, कि मोर देन द टेस्ट इटसेल्फ, द रिविजन इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट. सो दैट यूज्ड टू बी माय स्ट्रैटेजी. आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि हाउ मैं अपनी प्लानिंग बैकवर्ड करता था, उल्टा 1 दिन 3 दिन 5 दिन ऐसे करके आई यूज्ड टू प्लान माई डे. एंड देन प्लानिंग फॉरवर्ड भी व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि let's say if I have to do some topics on the next day, before going to bed I would make a list of topics कि मुझे कल ये topics करने हैं.
I would keep my options open, I would keep it flexible, I would prepare a list of 5 topics और उसमें से कोई भी 3 या 4 उठा लेता था based on what I feel like reading that day. अगर लग रहा है कि इकोनॉमी में माथापच्ची नहीं करनी है आज, तो I would just pick up history or geography. So like that, I would keep my options open, I would keep it a little flexible for myself. But I think this exercise really helps, क्योंकि जब आप फिर सुबह उठ के बैठते हो 9 बजे, फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि यार अब मैं क्या करूँ, right? I think that saves a lot of time, and वो एक थोड़ा जो feeling होता है of self doubt, उसको भी it sort of keeps at bay. So in that sense, it's very helpful. Acha, the last point in my list of questions is guidance, coaching needed or not needed. Yeah, I think this is a very, very subjective question. आपको खुद के लिए assess करना पड़ेगा. I will start with GS coaching and then come to law optional coaching. So if we talk about GS coaching, मेरा background क्योंकि law में था, I had pursued a degree in BA LLB honors. Basic geography, basic history, economics, sociology हम लोग पढ़ते ही हैं college में. So I didn't feel like I didn't feel the need for taking a full-time coaching for that, which is why I didn't. उसके अलावा but even then I think it's a very subjective thing. अगर आपको लगता है that you need guidance, then you should definitely take it. You can also take guidance for specific subjects, right? आजकल कितने सारे coachings हैं जो सिर्फ subject specific modules offer करते हैं. So then that is of course something to consider. Law optional maybe I think you need to be very clear on what you expect when you take coaching. What is your priority? Is it that I will get good quality content, notes वगैरह, या फिर I want to focus more on test writing and feedback, things like that. So I think your priority has to be very clear. जैसे I had joined SIRS Institute last year in 2023, और इस साल भी even though I didn't focus a lot on answer writing for law optional, मैंने एक ही टेस्ट लिखा था. But I think that was sort of a continuity coming from last year because I had written quite a few tests last year from the institute. So then it's very subjective. आपको देखना है क्योंकि again law में भी I think basic books वही हैं यार, मतलब really the base material is the Dukis and then some value addition for here and there. So then it's for you to decide how you want to proceed with it. Tests I think writing is very important. थोड़ा स्ट्रक्चरिंग को समझने के लिए पॉइंट्स को कैसे रेज करना है, जैसे द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, राइट, कि डेप्थ कितनी लानी है और फ्लो कैसे मेंटेन करना है आंसर में. दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम आदित्य तिवारी सर, कि उन्होंने ही मुझे बताया था बेस्ड ऑन सम आई थिंक सम अदर टॉपर्स कॉपी, कि इस तरह से लिखो कि केस को आगे से हाईलाइट ना करके जस्ट पीछे से एज अ एसेंशियली लाइक अ फुट नोट, राइट, मैं पीछे से नेम ड्रॉप कर रहा हूँ, सो विच इज काइंडा लाइक अ फुट नोट, राइट. So that was its strategy, and that was my takeaway from having taken guidance. So that is for something for you to decide. These were my main talking points. अब आपके कोई questions हो तो I'd be very happy to take them. So regarding the book list itself, did you do something specific for governance, internal security, or only the class notes? GS2 में governance के लिए. यार आई थिंक स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं गवर्नेंस के. जैसे बहुत लोग होते हैं जो विजन का मटेरियल फॉलो करते हैं, राइट, विजन की जो वैम आती है, दैट इज़ गुड. आई थिंक मोस्ट पीपल फॉलो इट, एंड आई थिंक ओनली आईएएस का भी एक डॉक्यूमेंट है विच इज समरी ऑफ द अदर मटेरियल. सो कई लोग उसको भी फॉलो कर लेते हैं, राइट, बट आई थिंक दैट्स अ स्टैंडर्ड मटेरियल. थोड़ा बहुत अगेन यू हैव टू रिसर्च. जैसे नीति आयोग के कई बार रिपोर्ट्स आते हैं, दे आर वेरी गुड रिपोर्ट्स. नीति आयोग हैज दिस रिपोर्ट ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बेस्ट प्रैक्टिसेस. दैट इज़ एन इनक्रेडिबल रिपोर्ट, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है वो. They also come out with this document on national best practices in terms of schemes. So जैसे तेलंगाना has this skilling and talent initiative called TASK. So इस तरह के schemes आते हैं उसमें, that again is excellent data. तो इसको अगर आप यूज़ करते हुए चलोगे, so that would be very very helpful for you. Here internal security specifically and about means generally, I think GS3 paper में I think one of the most beautiful things is this syllabus in GS3 in every topic is very very well laid out. बहुत ही अच्छे से elaborate किया हुआ है एक एक टॉपिक. तो अगर आप खुद से भी तैयार करना चाहते हो, उसको आप खुद से कर सकते हो. और GS3 मैंने खुद से ही तैयार किया था. सो जैसे मैंने बताया ना, डिजास्टर मैनेजमेंट और GS3 वगैरह में, ये IR वगैरह, सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी में मेरा अप्रोच यही रहता था कि आई यूज टू प्रिपेयर माई बेसिक पॉइंट्स और उसके ऊपर से वैल्यू एडिशन पॉइंट्स. एन एग्जाम्पल, आई थिंक वन मेजर थिंग दैट आई डिड वेल ओवर लास्ट ईयर वॉज टू राइट मोर एग्जाम्पल्स. So there are people who are able to write one example for every point. My sort of increment was not that dramatic, but I think I still was able to write one example for at least 60-70% of my points. So that is something I focus on. And GS3 में वो easy भी है. Internal security में you will get to write a lot of points. तो वही यार, मतलब मैं खुद से ही prepare करता था और fact heavy काफ़ी रखता था उसको जितना हो सके. Fact हो गया, कोई अच्छा सा quote हो गया. I don't remember which topic में it was, but I think there was some quote from Manmohan Singh ji about nationalism, right? Something about eating India from inside. और कश्मीर प्रॉब्लम में बहुत अच्छा वो है फ्रेज है फ्रॉम वाजपेयी जी, इंसानियत जमहूरियत कश्मीरियत.
राइट तो इस तरह के अगर आप यूज़ करोगे ना या तो इंट्रोडक्शन में या फिर कंक्लूजन में दैट विल रियली हेल्प यू हाँ And so for modern history, did you do the Bipin Chandra or only the spectrum? बिपिन चंद्रा मैंने कॉलेज में ऐसे शौकिया तरह से पढ़ रखी थी बट आई डोंट थिंक दैट रियली हेल्प मी फॉर द एग्जामिनेशन तो आई थिंक स्पेक्ट्रम करना इज बेटर प्राइमरली बिकॉज बिपिन चंद्रा इज नॉट रिविजन फ्रेंडली फैक्ट्स को ऐसे क्लियरली हाईलाइटेड नहीं है इसमें कि आप यही पॉइंट्स रिवाइज कर लो सॉरी सो विच इज़ वाई आई थिंक स्पेक्ट्रम इज अ बेटर रिसोर्स So jumping directly to spectrum books. Yeah, absolutely. In fact, if you don't want to jump directly, what you can do is to do the NCRTs first. So then the NCRTs and then the spectrum. And in geography, is there anything apart from NCRTs? Geography में यार if you don't feel the get the sense of satisfaction from doing the NCRTs, then you can think of GC Leong. बट आजकल उसमें से नहीं आते हैं सवाल पहले भी GC Leong ज़्यादा मेंस में रेलिवेंट थी रादर देन प्रीलिम्स पर अब तो मेंस में भी ज़्यादा ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं GC Leong से सो विच इज़ वाई आई वुड रिकमेंड डूइंग द NCRTs ओनली और यार यूट्यूब पे इतने सारे रिसोर्स हैं ना जैसे मैप वर्क के लिए जो हाई प्रायोरिटी मैपिंग एरियाज हैं कि रिवर्स हो गया माउंटेन रेंजेस हो गया माउंटेन पासिंग हो गया ये सब यू कैन डू फ्रॉम यूट्यूब वेरी वेल और मैं वही अप्रोच जो मैंने तमिलनाडु NCRT में बताई थी कि एक पेज खाली रख के उसमें मैप लगाना आई यूज्ड टू द सेम थिंग इन ज्योग्राफी ऑल्सो तो जैसे कोई मैप है माउंटेन पास वगैरह का तो मैंने खुद से बना के उसको वहाँ पे बुक में लगा लिया जो चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज वाला पेज होता है ना क्वेश्चन लिखे होते हैं दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर अस तो मैं उस पर ही चिपका देता था उसको दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू डू इट और हाँ आई थिंक मैपिंग अगर यूट्यूब से करो तो इट्स बेटर ऑल्सो बिकॉज विजुअल मेमोरी इज ऑलवेज बेटर इन थिंग्स लाइक दैट बाकी NCRTs आर गुड यार NCRTs आर मोर देन इनफ बाय एंड लार्ज फॉर ज्योग्राफी ऑफ कोर्स यू विल डू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ MCQs वगैरह तो यू विल गेट न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट बट बाय एंड लार्ज इट्स इनफ या And one more out regarding the note making, sir. Since you have also referred few bulky books like V.H. Shukla and all, so like, did you write those important things from the book in your notes, or is it something you just underlined for the conceptual understanding, and then you just made your notes via the PIPs? नहीं आई यूज्ड टू राइट इट डाउन आई यूज्ड टू मेक माई नोट्स इलेक्ट्रॉनिकली मैं लैपटॉप पे अपने नोट्स बनाता था सो आई यूज्ड टू राइट दिस थिंग्स डाउन तो जैसे मैंने कहा ना कि ये जो बल्कि बुक्स हैं VN शुक्ला वगैरह आई यूज्ड देम इन एन एनसाइक्लोपीडिक मैनर तो मैं बस वो टॉपिक पढ़ के उसके नोट्स बना के बुक को छोड़ देता था And the same you did for Dukhi as well, like. या आई मेड माई नोट्स बेस्ड ऑन द बुक्स या So once the notes are done, the books. या आई नेवर पिक द बुक्स अप एक बार मेरे नोट्स बन गए थे फिर मैंने उनको उठाया ही नहीं था कभी वापस या First of all, congratulations on all results from all of us. Thank you. And my question is that there is a particular technique in terms of GS courses such as geography in order to reduce the number of words and convey your point, such as diagrams and icons as such. So, what type of technique did you use in law optional for that? राइट इन लॉ ऑप्शनल ऑफ कोर्स डायग्राम वगैरह बनाने का स्कोप ज़्यादा होता नहीं है yeah so there's not a lot of scope for making diagrams in law optional of course right I mean you can sort of use flowcharts in some cases so for example about president's rule you can interconnect the different articles by using flowcharts right so things like that can be done diagram is there's not a lot of scope I think what Kritika Goyal ma'am did really well is that she used tables a lot so she used to use a lot of tables in her answers compare it जहाँ भी possible होता था for a comparative analysis of different provisions of let's say the IPC right I think that is something done flowcharts are a very good thing that you can use apart from that hub and spoke model I think इन तरह की चीज़ें these are things that you can do sorry hub and spoke so basically this kind of a diagram ना we make बीच में कुछ लिखे 1 2 3 4 5 6 this is okay this is really bad but oh, you get the idea right like what a hub and spoke is so the diagrams like this can be used yeah Baki I think the only change I made is what I was discussing with her that you know you keep your points front and center and then add the cases later yeah And how much of your preparation in foundation and in optional was like interlinked, and how was it useful in using these points over there and that one? yeah I would say that was very helpful so because I was very strapped on time I was telling you guys कि first attempt was very rushed for me because एक cascading effect होता है so when I wrote my first means I was occupied till end of September and then next prelims was only 6 months away so even then I didn't have a lot of time to prepare my content properly right so it was always a bit rushed for me across my 3 years so then what really helped me is my knowledge of constitutional law in GS2 so GS2 I'll be very frank I didn't prepare it very properly I used to rely very heavily on my
law ka material. And I think every year there are some questions which are useful. So I think this year there was some question about arbitration in GS2, so that was helpful. Last year there was something about unclause. So kahin na kahin it really helps you. Your knowledge of international environment law will help you. I remember in my very first mains in GS2 there was one question ki discuss with case laws. Very specific question, discuss environmental justice with case laws. Right, so that was very helpful. And apart from that, I think in the essay and ethics paper also is tremendously helpful because we study ideas like principles of natural justice in great detail, right, and constitutional principles. Constitutionalism क्या होता है हमको पता होता है जो कि कई लोगों को नहीं मालूम होता बहुत clarity में. Yeah, so that I think these things are very very helpful. And even in the interview, I would say, because law is one of those subjects that everyone also talk about. People might not know about it very well, but सबको बात करनी है कि अच्छा ये नया कानून है, ये crimes क्यों बढ़ रहे हैं, things like that, right? So law gives you a lot of discussion points in the interview, which keeps your interview always very fresh, and that has reflected my interview marks as well in both years. So yeah. Also, sir, like, what extra did you do to incorporate BNS in the criminal law section? Yeah. So that is something I worked very specifically upon. Of course, आप पेपर देखोगे लास्ट ईयर का तो they were very clear. उन्हें लिखा भी था कि आंसर in context of IPC 1860. So they were very clear they only want IPC. But even then I dropped the sections. So as I said कि I would say कि section IPC का section refer करके bracket में section so and so of BNS bracket में डाल के. But everywhere जहाँ पे भी मैंने IPC refer किया, in every single place I mentioned BNS sections also. Yeah. So the additional work what we need to do is we need to remember two different sections, two different provisions for the same thing, right? Yeah, I think you're writing 2025, right? No, sir. Huh. By the time you write, then तो I think you'll most likely only have to remember BNS. But I think in this transition period, 24-25 वालों को तो I think दोनों लिखने पड़ेंगे. It's better to. Of course, I mean question में specifically लिखा था कि IPC के context में discuss करिए. तो I said section so and so of IPC bracket में BNS. But this year, what I would recommend is writing, unless they say specifically कि IPC का discussion करना है, BNS bracket में IPC because IPC technically is already repealed. And maybe also people were checking like they are more accustomed to the older sections. Yeah. Right? So going forward, it won't make much sense because the law is non-est now, right? So yeah. So there are so many case laws for the same topic. So like ideally how many like case laws should be mentioned in the So this will actually, very good question, but this will depend on the subject. Constitutional law में it's very easy to find cases, right? Article 14, 15, 16, 19 में तो I had a humongous case list. But there'll be topics like mercantile law वगैरह जहाँ पे it'll be very difficult to find 2 cases also on a particular topic. So then it depends. Contract law then also becomes very section heavy. So थोड़ा एक padding वहाँ से हो जाती है that you can write the sections properly and then not worry so much about the cases. Then what you can do is कि अच्छा मैंने अपना analysis लिख दिया, एक आधी केस है पर फिर मैंने पूरा केस का 1-2-3 लाइन में लिख दिया. तो जहाँ पे अपन ऊपर लिखते हैं supported by Maneka Gandhi, नीचे you would say कि in supporting this argument in Appleby versus Myers so and so was held, right? थोड़ा ज़्यादा elaborate कर दिया उसको. Yeah. So that is the approach to follow. But overall, I would say for every 1 mark in the paper, you should have either a case law or a section number. So overall, a 10 marker should have a combination of 10 case laws plus points. Or you can include quotes also in that. So I think 5, 4, 5, 4 or फिर एक quote like that. I think that's generally the pattern I followed. उसमें भी I think what really helps is to have fresher cases, right? जो नए cases हैं on constitutional principles. That really helps. जैसे last year on environmental justice, very famous case, right? Ranjit Singh versus Union of India. That was very helpful. So fresh cases लिखेंगे तो I think that will give an edge. Yeah. So for the legal current affairs, did you follow bar bench, live law, or like did you only rely on the kind of notes what we get from coaching? Yeah. So what I used to bar and bench though I have never followed for anything actually. But I think live law has this compilation of 100 important judgments of this year. उसको मैं एक बार देख लेता था ऊपर से. Year का भी किसका? year compilation भी रहता है. Yearly compilation का होता है. So I used to see that. But other than that, not only just other than that, but primarily in fact, I would say I followed the table जो सर देते हैं of important cases of the year. जो list रहता है और एक table of quotes रहता है. So I used to use that quite frequently. तो पहले मैं उसमें से देखता था कि मुझे क्या इस टॉपिक के a good number of fresh cases मिल रहे हैं और अगर लगता था कि कहीं पे कोई केस नहीं मिल पा रहा है then I would go on my own wild goose chase and look for other cases. And the weekly updates what we get. Yeah. You could follow. Yeah, I used to follow. I wasn't able to follow them very consistently क्योंकि means बहुत ज़्यादा hectic हो जाता है, but I did follow them. Yeah.
So how did you gauge that these notes are enough to deal with the questions and the notes which you are preparing, whether they would be enough to deal with the question which are asking and the depth of the PYQ which is keep coming. How did you gauge yourself that besides any mentoring you were sure that these notes are enough that I would be able to let's say adequately deal with the questions which were coming. How did you deal with that? Yeah, so when you prepare your notes well based on 12 साल की BYQs ना, then itself you have covered very different dimensions of that question, right? जैसे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं या फिर इंटरनेशनल लॉ के जो थियोरेटिकल डिबेट्स हैं, सॉफ्ट लॉ वर्सेस हार्ड लॉ, दिस दैट, वर्टिकलाइजेशन, हॉरिजॉन्टलाइजेशन, थिंग्स लाइक दैट, वो 12 साल के PYQs में काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर हो जाता है. 12 ईयर PYQs है फेयरली लॉन्ग होराइजन. कहीं कहीं मुझे लगता था कि ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसमें से बहुत तरह के सवाल आ सकते हैं, जैसे अनक्लॉज या इस तरह का कोई क्वेश्चन होता था. और आई थिंक एक वो टॉपिक भी है ना अपना टेररिज्म एंड हाईजैकिंग वगैरह वाला, उसमें भी देयर इज सम वैरायटी. उसके लिए आई यूज्ड टू गो बैकवर्ड्स. देन आई वुड सी कि 2013 के पहले इसमें से कैसे सवाल आए हैं. दैट वाज माय एक्सरसाइज. आई वुड जस्ट लुक एट द PYQs एंड जहाँ पे आई थिंक द टॉप सब्जेक्ट इज टू वास्ट, देन आई वुड गो टू द PYQs. बट उसमें भी यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ एंड सी कि ट्रेंड क्या है. सो आर्टिकल 19 इन पर्टिकुलर, आजकल बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं. लास्ट ईयर बहुत स्पेसिफिक केस लॉज पे सवाल आते थे. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन और नॉट, बट देयर वाज दिस क्वेश्चन दैट लेडी गोज टू अ दूरदर्शन ब्रॉडकास्ट एंड द ब्रॉडकास्ट इज सस्पेंडेड. Which article is violated? Elaborate. This question is based on Indira Jaising versus Union of India. These are the exact facts of Indira Jaising case. So इस तरह के सवाल आते थे. But अब वो ट्रेंड नहीं है, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा तैयारी करना won't be very helpful. So that's again a judgment call that you'll have to make. Yeah. How you used to manage law optional and GS, and how much time you used to give to law optional in a day? So which attempt are you writing? 26. 26. So now you have very good time. मेरा थोड़ा लगता है, which is why I thought I should ask you first. What you should do generally is to do optional first, then GS, and then come to prelims preparation. So if you do, when you're doing optional right now, right, most of your day, 80% would go to the optional subject का preparation. You can do some GS subject on the side if you want, and newspaper reading चलता रहना चाहिए. So that is how it is. But between prelims and mains, if you ask me how to manage it, I would start my day with law optional. I would read the newspaper, और जो first slot में बता रहा था, the 4-hour slot that I used to keep, उसमें I would study law optional. So that is how I manage my time. And if I talk about this attempt in particular, it was very, very revision heavy. So constantly updating my notes, trying to add data points to my notes, things like that. So that is how I manage. I think there are people who give more time to optional, जो दिन में I think 50-60% time भी दे देते हैं optional को. But I didn't do that because law में ज़रूरत भी नहीं होती इतना heavy उसको रखने के लिए. क्योंकि if you're a law graduate in particular, then I think you will not need that kind of commitment. After prelims, how do you transition yourself from prelims to mains? आप GS4 पढ़ोगे पहले या society है? Yeah, that is what I used to do. So since obviously GS4 is the most scoring subject, right, within the 4 optional GS papers. So that is how I started. सबसे पहले मैं GS4 ही करता था. Then I would follow GS1, 2, 3. GS4 इसलिए पहले कर लेता था ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ उसकी. So I used to finish GS4 first, and then even while I was studying GS1, 2, 3, I used to keep on doing answer writing for case studies. Case studies की PYQs में करता रहता था. So जो भी subjects मेरे होते थे GS1, 2, 3, वो essentially GS4 के साथ साथ चलते थे. That is the approach that I followed. Sir, prelims के बाद revision का time मिलता है या सिर्फ answer writing? नहीं, prelims के बाद भी revision has to be the key, right? Answer writing is important, yes, but revision is ultimately the most important thing. There are a couple of things you'll have to do after prelims. Firstly, तो notes update करने पड़ते हैं, क्योंकि जब तक आप prelims तक के बाद means तक आते हो, कुछ नए development हो जाते हैं. So पहले तो notes update करने पड़ेंगे बैठ के, right? And then you'll have to revise, and then you'll do your answer writing. Unless you revise, what will you write about, right? Sir, essay और ethics में क्या approach थी और how did you go for the essay? What process did you follow? Yeah, so ethics से अगर मैं start करूँ तो first attempt was very scattered. I was just picking whatever material that I could find. But again, something that every topper will say, and it really works also, is to break down the syllabus into list of words. पूरा एक word list बना लो, जो भी words mentioned हैं, and then to have specific points for every single word, right? Have very specific case studies, very personalities who sort of embody the spirit of that word, right? So I think that is a very helpful strategy.
And ethics में I think there comes a point where you prepare the subject well now, then topics start to mesh into each other. Right? There is an intermingling that happens. Where you're able to cross reference points अलग-अलग जगह से. थोड़ा ये कोशिश करनी चाहिए कि points मेरे थोड़े fresh हों. Right? Even if I'm mentioning a very well-known personality, try to mention something very specific about that personality. ताकि examiner को भी लगे अच्छा यार ये तो मुझे पता नहीं था. Right? कुछ fresh उसको पढ़ने को मिले. That really helps. Ethics में again there is a lot of scope for making diagrams. There are a lot of videos, I think particularly Animesh Pradhan sir का एक video है about how he had a very mental framework for making diagrams. वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका, तो उसको मैंने थोड़ा incorporate करने की कोशिश की. बट यही है, जैसे अच्छा एक और चीज़, कई बार लोग कहते हैं कि एक एग्जाम्पल को ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए क्रॉस क्वेश्चंस, वो थोड़ा ओवर यूज लगता है. मेरा अप्रोच उल्टा था. मेरा अप्रोच ये था कि अगर मेरा एग्जाम्पल्स कंसिस्टेंट रहेंगे, इट विल रिफ्लेक्ट माई पर्सनल फिलोसफी इन द एथिक्स पेपर. Right? Just if I'm repeatedly talking about one of the other aspects of Gandhiji, of course he's such a dynamic personality and his life has touched every aspect of Indian society, Indian culture. तो आप अलग-अलग चीज़ें रेफरेंस कर सकते हो और एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ this person has a Gandhian mindset. Or if you talk about the Gita in very different dimensions, then that again sort of embodies your own personal philosophy. तो ये मैं करता था. I used to quote Gandhiji very heavily across my answers. I used to cite Gita very heavily. Not just Gita, but Indic philosophy in general. So from Buddhism, from Jainism, from the Gita, things like that. And coming to essay, I think you need to figure out your structure first of all कि मैं कैसे लिखना चाहता हूँ, because there's a lot of debate about this. कई लोग कहते हैं कि ऐसे पूरा एक flow में होना चाहिए. There should not be, you should not use subheadings वगैरह, right? क्योंकि subheadings break the flow. I used to think that subheadings are not only make the examiner's job easier in terms of following my progression of ideas, but it also helped me plan my essay better, right? So it doesn't sound like you're just rambling in the essay. So that was my structure, right? So it's very important that you figure out your own structure. मेरा normal structure होता था कि I would write an intro for 2/3 of the first page. Then connecting to that idea, I would write another paragraph which carries a historical perspective, right? उसमें भी मैंने बहुत templates बना के रखे थे कि history doesn't repeat itself वगैरह जैसे जो topics हैं, तो I would कहीं ना कहीं मैं Indian National Congress के through freedom struggle का एक idea लेके आऊँगा. Very standard points. And then I would, अच्छा, I didn't follow like a pestle model or anything, जो बहुत एक common approach होता है for essays. मेरा उससे भी ज़्यादा simple होता था what, why, how, why not and what else. I would just write the entire essay like that. कि जैसे एक जो ऐसे मैंने इस बार लिखा था कि happiness is the journey and not the destination. तो उस पर कि what is your understanding of happiness? How can you achieve happiness? What are some modern notions of happiness which are perhaps not correct? They're a little misguided. Why do people lose out on this sense of happiness in life? What more can we do as a society to find happiness and to promote a spirit of happiness in our society? And towards the conclusion, ki what is my vision as a civil servant to promote a spirit of happiness in the society? So things like that. Baki, I must concede कि I really didn't struggle a lot with the essay paper. बहुत ज़्यादा मुझे I didn't put in a lot of effort. I think people from law background generally would be comfortable with the essay paper. We don't get a proper structure. When we start writing, so we have some, basic, fundamentals that we will go on with this flow in the essay. Yeah. When we start writing the essay and when we reach to 2-3 pages, then we start omitting the essay. That is not doing the, the proper direction which we wanted. So, essentially, like how many essays do you write and any major suggestion for the essay to improve on? Yeah, I think I only ever wrote 3 to 5 essays per attempt. पहले अटेम्प्ट में शायद ज़्यादा लिखे थे, 6 लिख लिए थे. After that I wrote, I have to confess, I became a little overconfident also in my second attempt. First में I got 140 in the essay paper. So second में I got very overconfident to the point कि मैंने structure ही नहीं बनाया था in the actual essay paper. So what you said कि गोल बातें जो होती हैं फिर, I was just writing like that. An essay paper which is supposed to be a fairly relaxed paper, उसमें I ran out of time. So this happened during the second paper, which is why, sorry, what was the original question? No, the finding of the proper structure in the Yeah, structuring is very important. So if you have to break down the 3-hour time ना, ऐसे लिखने में actually I think एक ऐसे आराम से 1 घंटे में लिख जाता है. It doesn't take more than 1 hour to write the essay. So I used to take आराम से 15-20 minutes before every single essay, lay out my structure very clearly, and then go ahead with it. Yeah. And I think essay में what really helps is to look at topper copies. विक्रम ग्रेवाल सर वगैरह की कॉपीज़ तो देर टाइमलेस कॉपीज़. अनुदीप दूरी शेट्टी सर की कॉपीज़ हैं. दोज वुड बी वेरी हेल्पफुल. विवेकानंद सर की कॉपीज़ भी बहुत अच्छी हैं. Yeah, so I think these are some of the copies that you can look at.
उसके अलावा तो आई थिंक यार यू शुड जस्ट लेट योर ओन एक्सप्रेशन फ्लो ऐसे पेपर में. यू कांट रियली केज योर सेल्फ इन टू वन टेम्पलेट और द अदर. या और कई बार ये भी होता है कि मैंने अपनी स्ट्रक्चर में ये प्लान किया है बट मुझे एकदम से कुछ क्लिक किया तो एटलीस्ट एक सेक्शन में उसको डिवोट कर सकता हूँ. आई थॉट ये कोई अच्छा नया आइडिया निकल के आया है एंड आई थिंक यू शुड गिव योरसेल्फ दैट लिबर्टी इन द एसे पेपर. How important is language in the option? Like, should it sound too legal, using too many legal languages, or can like we can simply write the answer and put the case laws in? Yeah, I think you can write the answer in your own words. मतलब I don't think it has to be very legalistic. Of course, maxims जहाँ भी use हो सकती हैं, it always adds beauty to the answer, right? जैसे I think eminent domain में there are a couple of maxims, right? कि eminent domain, the principle itself is a balance between salus populi suprema lex and salus republica suprema lex. So I think that is a very beautiful way of summarizing the very idea of eminent domain. So maxims do help, but of course they're not central to the answer. And it's given that you won't be able to write maxims in every single answer anyway. Yeah. Yeah. So, the kind of thing that we can do for the GS papers, value addition, can we apply those things in the law option as well? You can, if you get the scope for doing that, then absolutely, right? अगर आप कर सकते हो, अगर आपके पास ऐसा content है, तो you can do it. But then of course, on a more principled level, don't drop facts वगैरह चीज़ों के बारे में, right? Like let's say a question is on environmental law, so you can develop your perspective using your GS points. But then obviously it would be a bit irrelevant to write specific GS points. So environment के fact points होते हैं वगैरह. But at a general level, you can write your argument, build your argument based on that. I think a lot of toppers used to do that. I think कुछ कॉपीज श्रुतिका मैम की भी मैंने देखी थी जिनमें उन्होंने ये वैल्यूएडिशन किया था बेस्ड ऑन जीएस. आई थिंक व्हाट इज मोर जर्मीन इज टू डू द अदर वे अराउंड कि आप लॉ ऑप्शनल से कंटेंट जीएस में लेके आओ. दैट इज समथिंग दैट इज ईजियर टू डू एंड मोर रिवॉर्डिंग ऑल्सो एंड कीप्स योर जीएस आंसर्स ऑल्सो फ्रेश. What I right now seeing is that I'm not able to recognize patterns. So what problem that this is causing me that I feel that I have notes for everything. Now I can't consolidate those things because considering this year, if I clear the films, it will be around 2.5 months. So Roughly, yeah. what to do for those 2.5 months? Yeah. If I'm not able to consolidate things, So- then how would I revise? Yeah, this is a problem that I also faced between my second and third attempts. First attempt में because I was very short on time, I was just making very very copious notes. बहुत ही बड़े बड़े notes बनाता जा रहा था मैं क्योंकि time नहीं था. धीरे धीरे across my attempts I started cutting things down. So this year I would say I cut my notes down very very extensively. I think at least 40% I just slashed my notes by 40%. पूरा उड़ा दिया था. So I think that is important. That is something you realize over time. Again, law optional में that is very very easy to do based on PYQs. You should just see कि ठीक है ये PYQs हैं. I should have points ready for it. But उतने ही points. As we were discussing, I need 8 to 10 points for one 10 marker. I just need those many points. If I have 20-25 points because the book I used was very extensive on that topic, please feel free to remove those points, right? जैसे something that I did this year, I think we discussed also about Article 19. Article 19 of course has so many different dimensions, right? और हम कॉलेज में भी उसको काफ़ी डेप्थ में पढ़ते हैं बट पेपर में उतने सारे डायमेंशंस आते नहीं हैं. तो इट्स यूजफुल कि हर डायमेंशन पे अगर आपको रखना भी है तो एक एक दो दो पॉइंट रखो एंड जस्ट मूव अलोंग, राइट? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आई रिमेंबर आई हैड केस लिस्ट ऑन 30 केसेस एंड देन आई स्टार्टेड कटिंग डाउन फ्रॉम देयर. That is very helpful. And about what you said कि quality suffer करती है when you try to write more quickly. Again, this ultimately is about revision only यार, right? Because when you see the beauty of law optional is कि you will always know मुझे लिखना क्या है आंसर में. वही limited 4-5 cases हैं, वही limited 4-5 articles हैं. Humanities जैसा अपना perspective develop नहीं करना है आपको आंसर में बैठ के कि मैं fresh एक approach दूंगा examiner को ऐसा कुछ. Very very clear about what is to be written, and then it's all about the strength of your revision. रिविजन आपको अच्छा है तो आप खट सारे पॉइंट्स खुद से लिख सकते हो, राइट? देन यू वोंट हैव टू स्टॉप एंड थिंक इन द आंसर कि अब मैं इसमें क्या लिखूं. सो आंसर राइटिंग तभी अच्छे से हो पाएगी जब रिविजन आपका रोबस्ट होगा. आई थिंक यू हैड सेड समथिंग अबाउट द टॉपर कॉपीज ऑल्सो. सो माई कॉपीज आर ऑलरेडी देयर ऑन द डी फैक्टो पोर्टल. 2022 के कॉपीज नहीं होंगे, तब तो मैंने ज़्यादा टेस्ट ऐसे से लिखे भी नहीं थे. मैं एक्चुअली पेपर में ही जाके आंसर लिखा था अपना पहला. 2023 के copies are already there on the portal. 24 maybe I think there would only be 1 or 2 copies because this year I focus very very heavily on my revision and value addition. So I think sir would probably have uploaded those 1-2 tests already, but if not you can ask them. Does anyone have any other questions? हाँ. Could you also write for current affairs in general because that is one thing
it is difficult to stick on one source, and if we Okay. need to stick, what should be that? So current affairs generally या फिर specifically for CLD? Generally. Not very rewarding. Prelims के लिए अगर specifically पूछो तो मैं तो यही कहता हूँ कि don't run after current affairs because our idea of current affairs is last 12-15 महीने का current affairs. UPSC's idea of current affairs is last 3 to 4 years. जो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, कोई भी एक अटेम्प्ट के पहले 3-4 साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकता. अब वो जो विंडो है 12 से 15 महीने का, उसमें से कितने सवाल आ जाएंगे? 5 या 6 सवाल, राइट? एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट यू विल हैव टू पुट इन फॉर दोस 5 or 6 hours विल नॉट गिव यू गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? बट देन अगेन न्यूज़पेपर डिलिजेंटली पढ़ना चाहिए, रेगुलरली पढ़ना चाहिए. नहीं, आई नेवर मेड नोट्स आउट न्यूज़पेपर्स. ये ज़रूर करता था कि कोई नई अच्छी स्कीम आई एग्रीकल्चर की तो एग्री के नोट्स में लिख दिया उसको. उतना तो ऑफकोर्स एवरीवन डज, बट ऐसे न्यूज़पेपर के अलग से मैंने नोट्स कभी नहीं बनाए. बट वाई न्यूज़पेपर रियली हेल्प्स इज थ्रू पेरिफेरल नॉलेज. सो जैसे 2022 में देयर वाज दिस क्वेश्चन अबाउट वियतनाम. देयर वर 5 or 6 स्टेटमेंट्स एंड यू टू सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. नाउ ऑब्वियसली किसी भी पेपर में या किसी भी मटेरियल में ऐसे पॉइंट्स रेडीमेड नहीं मिलेंगे अबाउट वियतनाम, बट आपने कहीं एक आर्टिकल में पढ़ा होगा दैट वियतनाम हैज़ अ रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बट नॉट अ वेरी गुड सर्विस इकोनॉमी. आपने कोई आर्टिकल पढ़ा होगा कि द कम्युनिस्ट स्टेट क्रैक डाउन अपॉन प्रोटेस्टर्स. So that is the peripheral knowledge. Na? One option was कि Vietnam has a strong service sector. You know it doesn't have a strong service sector. It says कि it has a single party system. You know it has a single party system. That is how newspapers help. वो knowledge आपकी धीरे धीरे consolidate होती है, which really helps you. And apart from it, did you study any? Yeah. So for only for sense of completion and to avoid fear of missing out, I used to follow the PTs. But as we know, for any sort of magazine, उसका हिट रेट तो ज़्यादा होता नहीं है, विच एवर मैगजीन इट इज़. बट एक वही है कि सेंस ऑफ कंप्लीशन मिल जाता है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि आई डिड व्हाट आई कुड डू, राइट? एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ लेवल हेडेड एज वेल. No specific lectures on SNT के लिए आई थिंक PT इज़ वेरी गुड. college? Okay. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बोथ T65 मेंस 365 वेरी गुड फॉर साइंस एंड टेक. या बट दैट वाज इट. करंट अफेयर्स के पीछे मैं ज़्यादा नहीं भागता था. I used to focus on my core books का revision only. Yeah. How was your testing pattern with respect to prelims preparation? So I used to follow a very basic model यार. मैं 3 बार में करता था. So in the first round I would just do the question that I'm sure about. I'm very comfortable with those questions. I would attempt those. And as I was going along, I used to make different kinds of sort of these things, indications. तो जैसे first round में जो सवाल हो गए उनको टिक कर दिया कि this is done. जो हैं कि आई कैन कम बैक टू देम. आई थोड़ा टाइम दूंगा तो हो जाएंगे, तो उनको आई वुड जस्ट सर्कल. एंड जो बहुत ही डिफिकल्ट लगते थे कि शायद छोड़ने पड़ेंगे, उनको आई जस्ट पुट इन बॉक्स अराउंड द क्वेश्चन नंबर. सो इन माय फर्स्ट राउंड आई जस्ट कीप ऑन मार्किंग देम लाइक दिस. आई थिंक बाय माय फर्स्ट राउंड आई वाज डन विद 45, 50, maybe 55 questions. Then I would do round 2 with just the circle questions. So इसमें I think I used to try to do at least 50 to 60% of the questions in this set. And then once I was done with everything, पूरा पेपर मेरा हो जाता था. I would have 10 to 15 minutes left at the end. Then I would tackle the square marked questions. And then I would try to see कि if possible, I would try to do 3, 4, 5 of these questions, if that. If not, I was okay with it. But one thing that I noticed for myself is, then again, this is something that you will have to think for yourself, is are you going to chase accuracy more, or are you comfortable attempting more questions, right? So my approach was the latter. I found that my accuracy is decent, so across my attempts I used to attempt a lot of questions. In the 2022 paper, I think I attempted 96. In 2023 difficult paper, I still attempted 92, 93, and this year I think I attempted 98. So क्योंकि again, if you think of it in terms of plus positive marking, negative marking, if net to net is positive, then it makes sense to keep on to not keep on marking options, of course, but to mark as many options that you feel comfortable with. Yeah. But were you asking about any other specific aspect of prelims paper? I just wanted to know how you trained yourself to score better. Like you would have evaluated yourself on the growth of prelims marking. I wanted to know where did you see the improvement? Like from the one test to the another, like what are the parameters you thought would be helpful for you to move up to the next step? That is what I wanted to know. Yeah, that's a little difficult to assess. If we talk about actual papers firstly, then it's not necessary there will be consistent growth. So in my first paper, I cleared the cutoff by some 11 marks. Second paper, something like 14 marks. This year I have a 120, 121. So I think I've cleared it by some 30, 32 marks ka difference. But then it's not consistent, right? It will vary.
Even if you talk about mock tests, as we were discussing, it's very difficult to sort of evaluate objectively, which is where the role of percentile calculation comes in. You take the full rank list of 5,000, 10,000 people. If there are 10,000 people, you need to make sure that I'm in the top 200, essentially 98 percentile. And then you can sort of be comfortable ki, haan, I'll be able to clear prelims. I think that is the only objective yardstick. Apart from that, for assessing yourself for prelims, there is no objective parameter. And to some extent, it becomes a little irrelevant also because the focus has to be on revision. So then, how well you're performing in a very specific mock test doesn't matter, right? Because that is really not a reflection of your overall preparation, because the syllabus is just so vast, right? Yeah. How much? Huh. Previous year question. So at this point, I've seen the last 10 years and वो याद हो गया है. Now what to do with those? Yeah. So there comes a point जो सवाल याद हो जाते हैं पूरे. I used to watch these videos on YouTube, 6-7 hour long compilations of PYQ marathon subject wise, right? After my first round itself मुझे याद हो गए थे, but I still did 3 rounds of it and across my 3 attempts. But now that I've learned them, if I'm repeating them, so how to go forward? I mean, what more to take out? Right, so we're not just looking at what the right answer is, right? We're also identifying themes कौन से ज़्यादा important हैं. We're also trying to identify कि किन topics में complexity बढ़ती जा रही है. So of course, Buddhism, Jainism is a short prelims topics. हर साल 1-2 सवाल तो आते ही आते हैं. But we also need to notice that the level of complexity has become insane over the last 2 years. Absolutely bizarrely insane. तो ये एक trend you have to watch out for. Then you have to see कि हाँ Buddhism है या फिर विजयनगर Empire है. I will need to watch more YouTube videos on this. तो थोड़ा go into a little bit of depth. जो encyclopedic approach मैंने बताई थी कि just for that one topic I can go into depth and I can pick up a thicker book, कोई PhD level type का कुछ उठा लिया उसके लिए. That approach is something that is worth following. Then again, studying the options very properly. जो wrong options भी होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना. These are the kind of things. So it's, again, as we were already discussing, it was not just about seeing what the right answer is, but exploring how much utility can I take out of every single PYQ. I think you were asking something. Since you have written 3 mains, so what changes did you see in your answer, like the increment in your marks for the optional in all the 3 attempts? Like whatever calculation you did, how much did it pay to you, and like in the last attempt, like what was the cumulative differences that it? No, it does pay. 100% it pays out. So in my first attempt, I was telling you कि I did not write a lot of answers. I just went to the paper and I write whatever I could remember. मेरा prep भी पूरा नहीं था. I think in paper 1, I think there are 19 questions, right, per paper. 19 questions all included, right? 5, then 3 plus 3 plus 3. So 19 per paper. I think out of 19, I was only able to write 12 or 13 questions per paper. I was seriously underprepared for that paper. So I think I got a 192 or something in that attempt in law optional. And then I obviously worked on things a bit in my second attempt. So I got a 254, which going by law optional is fairly respectable. This year I got a 265, which I think is one of the, if not the highest. But I think this year is a bad example because marks across optionals have dropped this year. Right? There are people across all very high rewarding options also who are suffering a little bit. So Because yeah. there also talks about like law में उतना marks नहीं आता है, तो sometimes like demotivate कर देता है कि was it a good decision to take law option? Yeah. But on the other side, I also see people getting good ranks, getting good marks also in law, so then it doesn't justify. Yeah, there is some truths, some fiction in this. Or I think essentially it's a personal decision to stick with one option or the other. But what I had thought when I was getting into law optional, how I rationalize it, is firstly, of course, it's a very, very vast option, at least 3,000 pages of reading per paper. Right? It's a very vast. But then I had thought कि I was looking at topper marks वगैरह. I noticed that if you add law option scores plus interview scores, no, on an average, वहीं offset हो जाता है. So law candidates, while sure, they get 10-20 marks less than other candidates. If you look at just their interview scores, they tend to do very well in the interviews. I think last year from de facto only more than 50% people had 200 plus in the interview, which is just absolutely remarkable, right? And then you look at the benefits in terms of GS2. Merit was very helpful because, as I said, I practically omitted GS2, right? In my first and to some extent even my second attempt. And in the essay as well. And then across all the papers, right? Because the core philosophy of the law is relevant for every single paper. But then again, I mean, I would not
sort of try to tell anyone कि भाई आप ऐसा ही करो. It's totally subjective. I mean, it's a judgment call that everyone has to take for themselves. I think we've covered pretty much all the questions. So Hello, sir. Am I audible? yeah, hi. So sorry to cut you off. Namaskar. First of all, very congratulations, sir. And you served as a source of inspiration for most of us across all of your time. So I'm joining through online. I had a few questions. I was waiting for you to finish. So first of all, this year they asked a question on criminal appeal to the Supreme Court. That was the first question. So now I had made my notes just like how you have. I only have PYQ notes, last 10 years of PYQ, and in my first admission I had made bookish notes which I realized that I would not be able to revise from them. Then I switched to PYQ mode. Now when I saw that question, I have prepared obviously criminal appeal, civil appeal and constitutional, everything. But Yeah. where does that end, sir? How would you advise me कि हाँ बस करो कि हाँ you can't preempt essentially everything? Yeah, so for me, that threshold where I thought ki I will go this far, but not any further, for me that threshold was the last 12 years ki PYQs, as we were already discussing. So by and large, that was my approach. But then, of course, I think again there is a bit of person judgment also involved in this. Now, I don't remember if there was a question on criminal appeal specifically in the last 12 years or so, but I thought that this is a very sort of fundamental article. If you look at the part of the Constitution where the discussion on Supreme Court and High Court starts, it's literally among the first 10 articles, right? So I thought कि ये तो important articles हैं, I need to cover these very well. And उसमें भी I follow that same table वाला format. So like article 132, 130, 32, 33, 34, ऐसे करके, all the way up to I think SLP. So that is how I had approached it. So I think I had my notes ready on that. But if you ask me specifically for the threshold, I would say the last 12 years के papers plus a bit of personal judgment. Okay, so thank you so much. Yeah. So one more question I had, this was with regards to essay. I had watched a video that Sir has put up on YouTube, and in that you mentioned that you scored 140 in your first attempt, which is incredible. It's an incredible score. And now when you were talking about your essay earlier, you said that happiness wala essay. Towards the end, towards the conclusion, you mentioned that you were talking about as a civil servant, what I would do. So is that something that you did across your attempts, talking for first person in your essays, bring yourself in, bring the third wall? Okay, Acha, I think I should clarify, that's a very good point. I did not use first person at all in my essays. I kept it very general ki we can do this or one should do this. That was across my essays, that was the kind of language I followed. And general मेरा approach होता था essays में कि if one essay is going more to in a more philosophical dimension, a more contemplative dimension, I would try to keep the other one very grounded, right? So, जैसे my first topic for this year was the happiness essay. The other one I think was it's better to do something than nothing at all. I think ऐसा कुछ करके एक topic था. Incidentally, the very last mock test that I had written was this very topic. So I had points ready for this topic. और I try to bring a contrast. So जैसे इस वाला ये वाला जो ऐसे था happiness वाला, I started on a very heavily philosophical note. I went into Vedantic philosophy, Shuddha Advait में what is the exploration of the idea of Satchidanand, right? And how that connects to the idea of Anand, joy, the journey of joy in life, things like that. Because this was very heavily philosophical. In the second essay, I kept it very grounded about how doing something is better than doing nothing. So then I gave a very grounded historical example of how the United Kingdom had the opportunity to take action before Hitler went on his rampage, but they chose not to take action. So then I always try to keep sort of a distinction between the essays to show the examiner my range, that I'm comfortable not only with very philosophical conversations, but also with like a more grounded analysis of history. Thank you so much for that. That sums up your strategy perfectly. So one last small question, really small. So I have done last 10 years of PYQ. What I've done is I've got them evaluated through AI. What I've done is whenever I thought this value addition is good, this will be good enough, I've added that in my note. So now apart from that, after prelims, hopefully I will clear. So after that, what I thought is I'll just add cases, recent cases, which I've also done through newspaper readings and other. Whenever I come across something, I add recent cases. But would you say कि I should go on a rampage strike कि 2 दिन के लिए just try to figure out cases, सारे topics के add cases and everything? Would that be advisable or just do it more organically?
Could you clarify your question a little bit, because I don't understand how those approaches would look different. So my question is, after prelims, should I just go allocate 2 days to figure out? Acha, got you. Understood your question. It'll have to be a combination of both. What I did was, in fact, a combination of both this year. So, of course, I started with giving some time specifically for a lot of topics. Constitutional law, वगैरह में, as I said, I was culling a lot of my old case lists and कुछ नए fresh case डाल रहा था मैं. But that again is an iterative process. अगर आपको ये case टकराता है from model answers or from your own online research, then you should definitely add it. So then again the idea is that you can't think of the entire process in mains in particular. इसकी ठीक है अभी मैंने इतना कर लिया और मेरा हो गया, right? Even during those 3 or 4 months you will have to keep on adding things, right? It's a completely iterative process. Alright, sir. So one, actually, this will be the answer to the last question. Sir, since you mentioned culling cases, so this is something that I've also come in conflict with, especially in constitutional law. So there are so many cases across the repetitive themes. क्योंकि इतने ज़्यादा dimension में कुछ answers लिख चुके हैं, तो there are so many cases and it gets confusing कि हाँ in the final 1-pager notes कौन सा रखूँ, कौन सा which one should I drop? So is there some sort of barometer or standards that you follow, or you just के जो भी याद रहेगा वो apart from the basic landmark cases? Yeah, दो ही parameters हैं यार, landmark cases and the most current cases. There's really nothing other than that. Alright, sir. Thank you so much for your time. Yeah, happy to help. Could you please throw some light on the interview experience? Yeah, interview I think is one of the most fun stages of the entire process, and I think जो लोग complain करते हैं ना about the, which also I've heard complain कि it's a very dull process. एक कमरे में बैठ के पढ़ते रहना. Interview sort of breaks that mold, and what is interesting is that if you do the interview preparation very well, it's also a beautiful journey of self-reflection, which is very remarkable about the interview preparation. I think I've been very lucky with my boards during both of my interview attempts. Last year I had Sanjay Verma sir's board, and this year I had Suman Sharma ma'am's board. Very engaging conversations. Everyone knows how cordial the board is, how friendly they are, how they want to actually have a meaningful conversation. बहुत specific तो I would not give you very specific inputs on this. Law वालों को generally पता होता है उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नए laws के बारे में prepare करना है. But something someone told me is कि in actual interview, they look at you as kids, right? Because their own kids are probably at your age or slightly younger than you. So they're like, we don't expect too much from you. We just expect you to come across as a natural personality, as an authentic personality. And that has been my own mantra as well for the interview. If I have to summarize it in one line, it's authenticity over anything else for the interview. That's all. So being from law background, like the questions revolving around law. Depends on what board the board wants to ask you. It could be from your DAF, specifically about your hobbies, your achievements, your educational background, where you are from, things like that. If you are coming from one service to another service like I was, it could be about, acha, you already have one service, why do you want this different service? How do you compare these services? What do you know about your own service? How has training been for you? Things like that. Then of course there are general current affairs. कुछ नया होता है तो अभी interview चल रहे होते तो I'm sure the tragedy in Kashmir would have been a very important point of discussion. Yeah. So just to confirm, is this the report you were talking about Niti Aayog? One second. So best practice in social sector. Yeah, this is not the report. The best practice for governance. Yeah, there are multiple reports like that. ये तो I'm sure you can download and look at it. There's also a report specifically on best practices in aspirational districts program, the one that I was talking about. Yeah. So, do you have any peer groups? Because I think that is one thing that that is what I feel, and I think most of you all come from similar colleges. So that peer group thing, is that a culture that you had, or what was the system that you had, if you had it? So I didn't, for preparation specifically, I didn't have a friend group at all. I was preparing all by myself. Particularly क्योंकि मैं घर से तैयारी कर रहा था, I was doing it all by myself. So I didn't have a peer group for preparation. But then, and then what I feel is that somewhere I feel that there is a need for it. So, could you suggest some ways as in how could that? Yeah, I think these days there's so many resources. Yeah, there are Telegram groups, coachings. Of course, you guys have your own community. Apart from that, also there are a lot of online,
apps वगैरह में, right? Like YPT app वगैरह has a lot of these UPS related study groups. I think these days there are library में you can make your own groups. So I think there are a lot of options open. It's just that during COVID, I started preparing from home towards the end of COVID. So which is why I was preparing all by myself. If I had the luxury of having a group, then of course that would have been the preferred mode for me as well. Yeah. Thank you. Yeah, happy to help. So I think we're done. Thank you so much for having me here today. It was gave me a lot of joy to interact with all of you. Thank you.